हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू EduShield। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द CUET syllabus of the domain physics. There will be total of 50 questions in which you have to attempt 40. You will get 5 marks for each correct answer and negative 1 mark for each incorrect answers. For unattempted questions, you will be awarded with 0 marks. The total marks will be of 200 and you will be provided with 45 minutes to complete the paper. Let's start with the syllabus. आपके CUET डोमेन पेपर ऑफ फिजिक्स में टोटल 10 यूनिट्स है जो कि आपके क्लास 12 के पोर्शन या सिलेबस से टैली करता है। तो आप चैप्टर्स और टॉपिक्स को मार्क कर लेना और उस हिसाब से पढ़ना। पहले यूनिट में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आते हैं टॉपिक्स सच एज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन, Coulomb's law, force between 2-point charges, forces between multiple charges, superposition principle, and continuous charge distribution. Electric field due to a point charge, electric field lines, electric field due to a dipole, torque on a dipole in a uniform electric field. Electric flux, statement of Gauss's theorem and its application to find field due to infinitely long straight wire, uniformly charged infinite plate sheet, and uniformly charged thin spherical shell. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, डाई इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. Also, the combination of capacitors in series and in the parallel, the capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates, energy stored in a capacitor, Van de Graaff generator. यूनिट 2 में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. इनमें इसके अंदर जो टॉपिक्स आ सकते हैं दे आर एज इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, द रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, voltage and current characteristics, linear and non-linear, electric energy, power, electric resistivity and conductivity, carbon resistors, color code for carbon resistors, series and parallel combinations, temperature dependence of resistance, the internal resistance of a cell, potential difference and EMF of a cell, combination of cells in series and in parallel, Kirchhoff's law and simple applications, Wheatstone bridge, meter bridge, potentiometer principle and applications to measure potential difference, and for comparing EMF of two cells, measurement of internal resistance of a cell. 3 में आता है magnetic effects of current and magnetism, concept of the magnetic field, Easted experiment, Biot-Savart law and its application to current carrying circular loop, Ampere's law and its applications to infinitely long straight wire, straight and toroidal solenoids, force on a moving charge in a uniform magnetic and electric field, cyclotron, force on current carrying conductor in a uniform magnetic field, the force between two parallel current carrying conductors, definition of ampere, torque experienced by a current loop in a magnetic field, moving coil galvanometer, its current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter, current loop as magnetic dipole and its magnetic dipole moment. Also, torque on magnetic dipole bar magnet in a uniform magnetic field bar magnet as per equivalent solenoid, magnetic field lines, Earth's magnetic field and magnetic elements, para, di and ferromagnetic substances with examples, electromagnets and factor affecting their strengths, permanent magnets. इसके ऊपर theory and numericals both can come in the exam, तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है. यूनिट 4 में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स, AC. इसमें फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड EMF एंड करंट लॉज लाइक लेंस लॉ, एडी करंट्स, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सारे टॉपिक्स आ सकते हैं. एंड फिर यूनिट 5 में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ये जो यूनिट है ये पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो इसके अंदर सारे थ्योरेटिकल रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सबके वेवलेंथ, सबके एम्पलीट्यूड वगैरह सब आ सकते हैं एग्जाम में.
Unit 6 is very important, which is optics. Optics can the reflection of light, scattering of light, blue color of the sky, Q hai, color of the sky, blue, optical instruments, human eye image formation, microscopes and astronomical telescopes, wave optics, proof of laws and reflection, interference, Young's double slit experiment, diffraction, resolving the power of microscopes, ये सारे टॉपिक से न्यूमेरिकल्स एंड टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करने को आ सकता है. ऑल्सो मैनी ऑफ द टॉपिक्स are deleted from your 12th board syllabus, but you have to study them in for CUET, so you can't skip any of these topics. यूनिट 7 में आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव्स, ये सारे टॉपिक्स आ सकते हैं. यूनिट 8 में आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई. ये भी पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड यूनिट है. इसमें आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल, एनर्जी लेवल्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, रेडियो एक्टिविटी, मास एनर्जी रिलेशन, रेडियो एक्टिव डीले लॉ, ये सारे टर्म्स पर क्वेश्चन आ सकते हैं. फिर बाद में आपका आता है यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. इसमें आपका आता है एनर्जी बैंड्स ऑफ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के. फिर जीनो डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये सारे इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. यूनिट 10 में आपका आता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स. ये चैप्टर मोस्टली डिलीटेड रहता है ट्वेल्थ के पोर्शन में, ट्वेल्थ बोर्ड के पोर्शन में, बट इट विल कम इन CUET, तो आपको पढ़ना होगा. सो द टॉपिक्स दैट कैन कम अंडर कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम, bandwidth of signals, फिर bandwidth of transmission medium, propagation of electronic waves in the atmosphere, sky and space, wave propagation, need for modulation, production and detection of an amplitude modulated wave. सो इन यूनिट्स को आपको कवर करना है as fast as possible and you have to revise it regularly. So this is for the portion. And lastly I would like to say कि EduShield का अपना खुद का ऐप है which is available on Play Store. For more test series, form filling, online counseling, live classes and doubt solving, you can join us on EduShield. So please go and download it from the Google Play Store.